Very good afternoon to all of you. Am I audible? Visible? Audible, visible? Am I audible? नमस्कार देवानंद, आनंद, प्रभु, विलासिनी. Yes, all clear. बहुत बढ़िया. So आज हम गोटे important topic ऊपर discussion करिवा on agriculture. So any doubt from last class? Last class through किछि कहार doubt अछि? Any doubt from last class? Last class रे बहुत important topic ऊपर हम discussion करथिले. So if you have any doubt, then you may raise your question here in the comment box. Definitely I will get back to you and clarify your doubts. ताले हम आज रो टॉपिक ऑफ डिस्कशन को जिबा. आज एग्रीकल्चर ऊपर डिस्कस करबा. सो डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऊपर हम डिस्कस करबा. हम जानि छे कि इकोनॉमिक्स रे तीनटा सेक्टर ऊपर हम मेनली पढुतले. प्रथम हला प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर. आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर. समस्तंकर मन अछि बोली हम भाबुछि. मन अछि समस्तंकर कि नहीं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर मन अछि कि नहीं? सो प्राइमरी सेक्टर रे हमें कोन देखुतिले? प्राइमरी रे हमें देखुतिले एग्रीकल्चर एंड अलाइड एग्रीकल्चर. कोन देखुतिले? एग्रीकल्चर एंड अलाइड एग्रीकल्चर ऊपर डिस्कशन करथुले. सेकेंडरी रे मैन्युफैक्चरिंग ऊपर डिस्कशन करथुले. कोन करथुले? समस्त कहिबे. सेकेंडरी रे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सेक्टर रे आसुतला. प्राइमरी, सेकेंडरी रे टर्शियरी. टर्शियरी सेक्टर रे वी आर टॉकिंग अबाउट सर्विस लेड इकोनॉमी. सर्विस सेक्टर ऊपर डिस्कशन करथुले. ये तीनटा सेक्टर को छाडी देला परे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर को छाडी देला परे मु क्वाटरनरी और क्वीनरी आउ दुटा सेक्टर ऊपर डिस्कशन करथि. जदि के ता ऊपर कहि परिबे कोन व्हाट इज क्वाटरनरी एंड व्हाट इज क्वीनरी सेक्टर. सो प्राइमरी सेक्टर ऊपर जे मैं डिस्कशन करबा. सेम टॉपिक एट जो एग्रीकल्चर देखुचंदी. ये एग्रीकल्चर हमर डिफरेंट सब्जेक्ट रे अछि. सेम एग्रीकल्चर अछि कोठी हमें आज पढुचे इकोनॉमिक्स रे. एग्रीकल्चर ज्योग्राफी रे मध्ये अछि, एनवायरनमेंट रे मध्ये अछि. सेम टॉपिक geography, economics, environment. Then what is the difference? ये तीनटा जाका different subject रे हम जो agriculture पढुचे. What is the difference between agriculture in economics, agriculture in geography and agriculture in environment? Here we are taking agriculture as the primary sector. वो हिसाब रे अपन नउचे we are taking agriculture as the primary sector. अपन primary sector हिसाब नउचे. One of the important sector of the Indian economy or any other economy. सो एठी हम आउ कोन देखुचे. एठी देखुचे हमर जीडीपी को यार कंट्रीब्यूशन केते, पर कैपिटा इनकम को कंट्रीब्यूशन केते, एम्प्लॉयमेंट को यार कंट्रीब्यूशन केते, स्ट्रक्चरल चेंज केमती होउची एग्रीकल्चरल सेक्टर रे हम देखुचे. एठी स्ट्रक्चरल चेंजेस केमती होउची ये सब हम देखिबा इकोनॉमिक्स रे. इन द सेम वे ज्योग्राफी रे हम कोन देखिबा. ज्योग्राफी रे कोन देखिबा बहुत इंपोर्टेंट. एग्रीकल्चर तीनटा जगह रे अछि हमर. इकोनॉमिक्स रे कोठी अछि, ज्योग्राफी रे कोन पढिबा, एनवायरनमेंट रे कोन पढिबा. एई पॉइंट को डिस्कस करि सला परे I will be coming to certain important questions. आज बहुत भला क्वेश्चन अछि और important question अछि. एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन अछि. along with concepts I will discuss. Now geography रे हमें देखु जे this is about spatial distribution. कोन देखते हमें this is about spatial distribution माने with respect to place. को रीजन ने को टाइप रो ज्योग्राफी हमके देखा जाउची एवं को टाइप रो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस से रीजन ने होची. फॉर एग्जांपल ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर कॉटन कल्टीवेशन. Alluvium soil is good for vegetable production or paddy production or wheat production. तो एमते हम डिफरेंट एंगल ले ज्योग्राफी देखुचे स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन. एनवायरनमेंट रे देखुचे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. एनवायरनमेंट रे हम कोन देखुचे ना, एनवायरनमेंट रे हम देखुचे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस रा किछि नेगेटिव इंपैक्ट अछि कि नै, कहा ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट अछि कि नै हम देखुचे. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस रा नेगेटिव इंपैक्ट एनवायरनमेंट ऊपर अछि कि नै. ये तीनटा होची इंपोर्टेंट पॉइंट बा इंपोर्टेंट सब्जेक्ट जोथरे एग्रीकल्चर कॉमनली यूज्ड. सो हमें आज इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऊपर डिस्कशन करिवा. इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऊपर डिस्कशन करिवा. आज बाय द एंड ऑफ दिस क्लास वी आर गोइंग टू गेट व्हाट इज एग्रीकल्चर, व्हाट इज फूड फिलोसफी इन इंडिया, खरीफ क्रॉप कोन, रबी क्रॉप कोन, ग्रीन रिवोल्यूशन कोन हैला. देन आउ किछि इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर मत डिस्कस करिवा. हमें लाइक एमएसपी कहबी बहुत इंपोर्टेंट. एमएसपी, प्रोक्योरमेंट प्राइस, एमआईएस ये सब टॉपिक ऊपर हमें आज रो क्लास में डिस्कशन करिवा. ठीक अछि.
ठीक अच्छे समस्त को बुझीला ना का कुछ डाउट अछि? Yes, very good afternoon to all of you. Good afternoon Shankar, very good afternoon Shanti. Shanti, you are last time there in my class. I think you are attending this session from Andhra Pradesh. I'm very much happy that people from across the state are attending this session and finding all this session very interactive, right? Okay. ठीक अच्छे सो ये ହେଲା तो डिफरेंट टॉपिक जो टॉपिक मानक ऊपर आज हम डिस्कशन करबा एथर सबुठ इंपोर्टेंट होच हम पई एमएसपी प्रोक्योरमेंट प्राइस एमआईएस और एफआरपी फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस ये चारिटा ऊपर हम आज डिस्कस करबी ग्रीन रिवॉल्यूशन ऊपर आज डिस्कस करबी ग्रीन रिवॉल्यूशन टू बी डिस्कस्ड इन टुडेस सेशन सो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट रे मध्ये हम आज किछि डिस्कशन करबा लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन ऑन नाबार्ड लेट्स फर्स्ट डिस्कस अ क्वेश्चन ऑन नाबार्ड ऊपर ये क्वेश्चन देखंदो कोन ये कहूची दुईटा ऑप्शन देछि ये कहूची दुईटा ऑप्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फर्स्ट ऑप्शन कहूची इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टैब्लिश्ड इन 1982 ट्रू और फॉल्स फर्स्ट पॉइंट देखिबा व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमें कहा को कहूचे which is mentioned in the constitution example of certain constitutional bodies like UPSC high court supreme court ये सब होते हैं constitutional bodies OPSC even your OPSC is a constitutional body OPSC रा इंटरव्यू रे ये क्वेश्चन पचरा जायतिला कि कटक रे OPSC रा इंटरव्यू दवा को आछंती कोन constitutional body कटक रे अछि constitutional body रो अर्थ होची which are mentioned in the constitution in a specific article if they are mentioned then they are known as constitutional bodies example state PCS या पर डिस्कशन है आर्टिकल 315 नु 324 भितरे डिस्कशन है कहा ऊपर ना यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस ऊपर डिस्कशन है कॉन्स्टिट्यूशन देन हाई कोर्ट आउ गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अछि कटक रे यस और नो नाउ कमिंग टू आवर क्वेश्चन आम क्वेश्चन कहूची कहा पर ना नाबार्ड ऊपर आजिरो सेशन में मु डिस्कशन करथिली हाउ आरबीआई रो गोटे स्पेसिफिक ब्रांच हाउ आरबीआई रो गोटे स्पेसिफिक ब्रांच केम आउट and it formed NABARD हाँ कि नहीं तो NABARD केवे फॉर्मेशन इतला 1982 yes it is correct 1982 रे फॉर्मेशन इतला this is completely correct now whether it is true or false first option is true or false शांति को जो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 agreed completely article 280 फाइनेंस कमीशन ने कौन डिस्कस होईची article 280 फाइनेंस कमीशन this is a constitutional body as well so हमें वर्तमान देखिए नाबार्ड टा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की नहीं यस और नो whether NABARD is a constitutional body or not yes or no NABARD is not a constitutional body so first option is wrong second option को आसीबा this is the apex banking institution to provide finance for agricultural finance ପାଇଁ the question is whether this is the apex body or not this is the apex body or not to provide finance agriculture एटा ठीक अछि कि नहीं yes correct last option second option correct yes this is the apex body ये कौन करछि ना refinance करछि related what related to agriculture and rural development ये refinancing agency बा refinancing body तापर हम देखिबा ताले एटा कोन हल आंसर a b c d भितर what is the correct answer only 2 is correct बहुत बढ़िया only 2 is correct so option b is the correct answer next jiba hame next question देखिबा which of the following countries is the largest exporter of sugarcane in world which of the following country is the largest exporter of sugarcane in world इटा सिंपल क्वेश्चन क्लास 6 रो बही रे अछि क्लास 6 रो ज्योग्राफी बही रे अछि जदी के पढिथिबे बहुत सिंपल क्वेश्चन ओडिया मीडियम रो ज्योग्राफी बही रे भी मेंशन नै छी एनसीईआरटी बही रे भी मेंशन नै छी ओडिया मीडियम रे भी मेंशन नै छी एवं एनसीईआरटी रे भी मेंशन नै छी क्यूबा जामाइका या ऊपर पढिथिबे समस्त आकु चाष पई कदली चाष पई फेमस कॉन्टिनेंट पढिला माने बर्तन जदी हमें एक्सपोर्ट कथा देखिबा स्पेसिफिकली जदी हमें एक्सपोर्ट कथा देखिबा एक्जेक्टली एक्सपोर्ट ताले को कंट्री ना Brazil is the largest exporter correct answer Anvesha correct answer Shanti yes sugar bowl of India सौदामिनी जय जगन्नाथ सौदामिनी sugar bowl of India के को कंट्री को हमें कहूचे sugar bowl of India
which country is called as sugar bowl of India? Oh, sorry, which state is known as sugar bowl of India? Uttar Pradesh. But nowadays, sugarcane industries, they are shifting from north to south. Sugarcane industries, they are shifting from north to south. Why? Now, because of the conducive climate. South India climate, ये कौन करछि ना सुक्रोज कंटेंट अधिक रखुछि. Sucrose content अधिक रहुछि कोठी South India sugarcane. That's why sugar industries, they are moving towards south. Sugar industries, they are moving towards south. What is the correct answer here? Na Brazil. Brazil is the correct answer. Now, next question ko diba, which of the following statement regarding sugarcane is correct? Which of the following statement is correct? It is the least water intensive crop. True or false? This is the least water intensive crop. Yes or no? Least water intensive crop. True or false? It can be grown on all varieties of soils ranging from sandy loam to clay loam. Karnataka is the top sugarcane producing state in India. Karnataka is the top sugarcane producing state in India. Least water intensive crop ki? Yes or no? The answer is no. This is not least water intensive. ये least water intensive नुहे. Okay, side please. Yes. देखो समस्त क्वेश्चन देखो एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन. Equity, this is the least water intensive crop. Answer is no. This is not least water intensive crop. Then how can it can be grown on all variety of soils ranging from sandy loam to clay loam. This is one of the important characteristics of sugarcane cultivation. Sugarcane cultivation pai हमको कौन दरकार? Any type of soil. Any type of soil. But remember, the sugarcane cultivation हुए upcoming year मानक pai से soil रो fertility decrease हो जाए. The soil रो fertility decrease हो जाए. Other crop बेसी वाला production करिवनी. Yield कमी जीवो in case of other crops. So second option is correct. Third option, Karnataka is top sugar producing state in India. Top sugar producing state Karnataka. True or false? Yes, true. This is yes, this is true. Second or third option correct. Second or third option correct. Everyone clear? Everyone clear? Okay. Next question ko jiba. Next important question ko jiba. Related to diammonium phosphate. The question is related to diammonium phosphate. Ita kono? Diammonium phosphate hochi gote fertilizer. Yes or no? Diammonium phosphate, this is a fertilizer. So a question hochi, this is the second most commonly used fertilizer in India after urea. After urea, true or false? This is the second most commonly used fertilizer after urea. Urea पर ये कुछ second most utilized fertilizer होची किए diammonium phosphate. Yes or no? Yes, correct. सबुठ अधिक यूज हुए भारत रे यूरिया. यूरिया पर second यूज हुए diammonium phosphate. आपको shortcut रे DAP को आ जाए. कौन को आ जाए? आपको DAP को आ जाए. The nitrogen content ये कुछ कहते हैं ना is lower than that of phosphate. Phosphorus. Nitrogen content is lower than that of phosphorus. Yes, true. Phosphorus content एतरे सबुठ अधिक था. एटा लकन diammonium phosphate रे ना रुही जानी पड़ते एतरे phosphorus content टा अधिक अछि as compared to nitrogen. So both the options are correct. Dita जाका option correct. But come to the question. Question कौन पूछी? Which of the following statement given is or are not correct? Which of the following statement are not correct? Tell कौन अब? What will be the correct answer? देखो मैं टेक्निकली केमती पचारछि क्वेश्चन ए स्टेटमेंट को ध्यान देबे तो नॉट लिखा है. दैट्स व्हाई आई मेड इट बोल्ड एंड अंडरलाइंड. व्हाट नॉट करेक्ट? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कौन बताले आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? अपर्णा डी, शांति डी. बहुत बढ़िया. नाइदर वन नॉर बी, बिकॉज बोथ 1 and 2 or A and B, they are correct. Both the statements here given are correct. Fine. Next question को दिबा. Consider the following statements regarding contribution to GDP. Agriculture related statement देछि related to contribution to GDP. Related to contribution to GDP.
कौन देखिबा एठी हमें फर्स्ट पॉइंट कहूची एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू जीडीपी कौन कहला ना एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू जीडीपी ट्रू और फॉल्स हमें देखिए एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम एग्रीकल्चर सेक्टर रे एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम और इट अट्रैक्ट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ लेबर फोर्स नाउ ये कहूची एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू जीडीपी ट्रू और फॉल्स yes true yes true or no yes or no yes or no no service sector contributes maximum so first option is wrong second option maximum workforce is in primary sector maximum workforce is in primary sector if there percentage देखिबा एटा होची approximately 54% in primary sector total जदि एग्रीकल्चर सेक्टर रो कंट्रीब्यूशन देखिबा जीडीपी को ताले एटा होची approximately केते होबो approximately केते आसुची एटा yes least contribution सबुट अधिक आसुची सर्विस सेक्टर तापर सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तापर आसबो एग्रीकल्चर सेक्टर हला सो इट कोन देखिले हमें सेकंड फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट व्हाट इज द करेक्ट आंसर ए बी सी डी भीतर करेक्ट आंसर किए कौन होता है ना करेक्ट आंसर इज बी 2 ओनली करेक्ट आंसर 2 ओनली नेक्स्ट दिवा हमें कॉस्ट कैलकुलेटेड पर हेक्टर एटु बर्तमान हम कांसेप्ट वाइज डिस्कस करिम गोटे क्वेश्चन कहिबी से क्वेश्चन रे थिबा कांसेप्ट को डिस्कस करिम एग्रीकल्चर रही ये कांसेप्ट प्रणाम लिखता ये 17% प्रिय बहुत बढ़िया करेक्ट एब्सोल्युटली करेक्ट सो देखिबा हमें कॉस्ट कैलकुलेटेड पर हेक्टर यार मीनिंग कोन हमें बुझिबा प्रथमे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ फार्मिंग फिक्स्ड कॉस्ट तो देखिए हमें कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पहले हमें कोन बुझे प्रथमे देखिया कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कोन ये होची क्रॉप को मैनेज करिया पई जत्ते की कॉस्ट इनकर्ड हुए जत्ते की कॉस्ट लागे हमको एक क्रॉप को मैनेज करिया पई कोउतरे ना एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को पर हेक्टर गोटे हेक्टर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करिया पई गोटे हेक्टर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करिया पई बा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करिया पई जति कि हमको रिक्वायरमेंट हुए रिक्वायरमेंट फॉर व्हाट रिक्वायरमेंट फॉर इनपुट्स को इनपुट ना सीड्स फर्टिलाइजर लेबर मशीनरी एंड अदर इनपुट्स फॉर फार्मिंग याकू इनपुट दवा पई हमको जति की आवश्यकता पड़े तार कॉस्ट जति की सही कॉस्ट को कहा जाय कोन ना कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन सो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करिया पई जोड़ा का इनपुट लाइक सीड्स फर्टिलाइजर लेबर मशीनरी एंड अदर इनपुट्स यार जो कॉस्ट है सही कॉस्ट को कौन कहा जाए कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बुझेला बर्तन कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कौन एवरीवन क्लियर व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन लास्ट पे बर्तन में क्वेश्चन को आसीबा ये क्वेश्चन देखो ये कौन पहुंची कॉस्ट कैलकुलेटेड पर हेक्टर कौन हो एबीसीडी भीतर व्हाट इज द करेक्ट आंसर cost calculated per hectare what is the correct answer समस्त कोंतु समस्त कोंतु कोन हबो so the correct answer is लेटर साइज तो बड़ा अछि बहुत ऑलरेडी बड़ा अछि ठीक अछि देखियो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन पचारछो एकर टू हेक्टर अप्रोक्सीमेटली 1 हेक्टर अप्रोक्सीमेटली 2.47 एवळे आसीबो बा 2.5 अप्रोक्सीमेटली 2.5 एकर नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिबा हमें ताले नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची होल्डिंग व्हिच इज रीजनेबल फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द कल्टीवेटर बट नॉट सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चरल ऑपरेशन बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन आसे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कौन कहूची ना ये कहूची होल्डिंग माने ये फार्मर होल्डिंग कथा कहूची अर्थात फार्मर पाखरे केते लैंड अछि ये कहां पर डिस्कस करची ना टॉक्स अबाउट लैंड अवेलेबिलिटी विथ द फार्मर पाखरे केते लैंड अछि फार्मर पाखरे केते लैंड अछि ओ हिसाब रे ये देखुची ना व्हिच इज
रिजनेबल फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ता निजर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पई बा सब्सटैंटिव एग्रीकल्चर पई निजर प्रोडक्ट निजे यूज करिया पई निजे यूज करिया पई जोडा को से प्रोडक्शन करूची सेटा but that is less than agricultural operation. Blood screen maybe because of your slow internet connectivity, but mo pakhare भी YouTube version भी गोटे मो student view देखुची, in student view it is showing fine. ठीक अछि मु कहि दउची एटी कोन देची ये क्वेश्चन कहूची कि गोटे फार्मर पाखरे केते अछि ना तार स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करिया पई जति कि दरकार सेति अछि बट एग्रीकल्चरल ऑपरेशन माने से मार्केट रे सेल करिया पई जति कि दरकार सेति कि नाही ताले को कोन कहै छै इकोनॉमिक होल्डिंग बेसिक होल्डिंग ऑप्टिमम होल्डिंग नॉन ऑफ दिस कोन कहले गोटेला इकोनॉमिक होल्डिंग गोटेला बेसिक होल्डिंग आ गोटेला ऑप्टिमम होल्डिंग which of the following is true कौन कहबा हमें को तो हमें देखिबा कि स्पेसिफिकली कौन कहला ना गोटे फार्मर पाखरे जेति की लैंड अछि गोटे फार्मर पाखरे जेति की लैंड अछि से लैंड इज सफिशिएंट फॉर ओन प्रोडक्शन निज पई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करिया पई सफिशिएंट बट मार्केट रे बिक्री करिया पई सफिशिएंट नहे ताको कौन कह दे ताको जे बेसिक होल्डिंग कौन कोन ताको दैट इज नोन एज बेसिक होल्डिंग सो दिस इज रीजनेबल फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बट नॉट सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चरल ऑपरेशन but this is insufficient for agricultural operation or to sell in the market रे बिक्री करिया पे एटा insufficient तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को दिबा शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम को एग्रीकल्चर सेक्टर रो शेयर केते नेशनल इनकम को एग्रीकल्चर सेक्टर रो शेयर केते हमें ऑलरेडी पढिले को सेक्टर रो शेयर सबुठ अधिक ऑलरेडी हमें पढिले को सेक्टर रो शेयर सबुठ अधिक को सेक्टर शेयर सबुठ अधिक समस्त कहबे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी भीतर सबुठ अधिक कार एटी ऑप्शन अछि केतना शेयर ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इनकम इज 28% और 30% और 32% और 34% और 34% which is correct सबुठ अधिक हमें जानि टर्शियरी सेक्टर सबुठ अधिक कहार टर्शियरी सेक्टर सो एठी देखिले हमें शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम केते 28% केते परसेंट 28% बहुत बढ़िया वेरी गुड पॉइंट शांति सौदामिनी अपर्णा ठीक कहजन समस्ते après नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये question is related to green revolution कौन कहली this question is related to green revolution कौन हम क्योंकि green revolution induced regional disparity ये फर्स्ट पॉइंट कहूची green revolution कौन कला नहीं कहूची regional disparity increase कला it induced regional disparity second कहूची green revolution induced intercrop disparity which of the following is true गोटे पर गोटे हम डिस्कस करछ मते कोंतु ग्रीन रिवॉल्यूशन दा को रीजन में सक्सेसफुल हेतिला whether it was successful in pan india basis ये थ्रू आउट इंडिया सक्सेसफुल हेतिला कि yes or no green revolution whether it was successful throughout india yes or no answer is absolutely no ये कोड सक्सेस हेतिला ना it was partly successful कोडी ना partly successful in western उत्तर प्रदेश then पंजाब और हरियाणा western उत्तर प्रदेश रे it was successful clear पंजाब हरियाणा एवं western उत्तर प्रदेश रे it was successful now even throughout उत्तर प्रदेश it was not successful western part जो देखुछ यूपी रो से पंजाब हरियाणा कल्चर सहित समान पंजाब प्लेन रो कल्चर सहित समान समस्त इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी रे पड़े ईस्टर्न यूपी जोटा देखुचंदी सेटा गैंजेटिक प्लेन रो कल्चर गैंजेटिक प्लेन रो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन सहित समान सो छत्तीसगढ़ झारखंड बंगाल एठी जो टाइप रो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ईस्टर्न यूपी रे हमको सेम टाइप रो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन देखा जाय ना एटा कोडी पढिबे एटा ज्योग्राफी पढिला बेले पढे
आ कोई ज्योग्राफी सेपरेट इकोनॉमिक्स सेपरेट ज्योग्राफी इंडिया फिजिकल पढ़िला बेले याकू जानिबा दरकार कि वेस्टर्न यूपी रो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कोन एवं ईस्टर्न यूपी रो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कोन वेस्टर्न कोन एवं ईस्टर्न कोन दैट इज वेरी इंपोर्टेंट देन कहले पंजाब हरियाणा सहित एटा समान ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज सक्सेसफुल ओनली इन दिस रीजन्स ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज सक्सेसफुल ओनली इन दिस रीजन्स अदर रीजन नुहे शांति बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन एटी लिखिचा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन नॉर्मन बोरलग इंडिया रे एमएस स्वामीनाथन यस नॉर्मन बोरलग काहे कि हमें पूछे because of high yield variety seeds he is father of high yield variety seeds हैला समस्त पॉइंट गुडा को मार्क करिवे रिवॉल्यूशन केबे हेतला ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत बढ़िया पॉइंट ओके सो ये कहूची रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ैला त माने जदि हम इंडिया मैप रे आपको देखियो ये कोठी सक्सेस दिखला ना ए रीजन ने ये कोठी सक्सेसफुल इन दोस पार्ट ओनली यदि हम देखिबा ईस्ट इंडिया रे इट वाज नॉट सक्सेसफुल साउथ इंडिया रे इट वाज नॉट सक्सेसफुल ताले फर्स्ट स्टेटमेंट ग्रीन रिवॉल्यूशन ब्रॉट रीजनल डिस्पैरिटी ट्रू और फॉल्स ग्रीन रिवॉल्यूशन इंड्यूस्ड रीजनल डिस्पैरिटी ट्रू और फॉल्स ट्रू और फॉल्स ट्रू रीजनल डिस्पैरिटी क्रिएट करला बिकॉज़ ए रीजन रे एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी अवेलेबिलिटी बढ़ी गला एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी अवेलेबिलिटी 8 बढ़ी गला अधिक और अधिक प्रोडक्शन ए रीजन है रेस्ट ऑफ द रीजन ने से प्रोडक्शन हैला नियो सो से रीजन इकोनॉमिकली प्रॉस्पर करी गले वेयर एज अदर रीजन्स दे डिडंट स्टैंड इन कंपटीशन टू दिस रीजन्स बुझेला सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट सेकंड ऑप्शन कहला इंटर क्रॉप डिस्पैरिटी यार अर्थ कोन ग्रीन रिवॉल्यूशन ने को क्रॉप को अधिक और अधिक इंपोर्टेंस दिया जाउत ग्रीन रिवॉल्यूशन ने को क्रॉप को अधिक इंपोर्टेंस दिया जाउतला को क्रॉप रो अधिक प्रोडक्शन होतिला व्हीट प्रोडक्शन अधिक होतिला यस सर नो अधिक को प्रोडक्शन होतिला व्हीट प्रोडक्शन होतिला ताहले मते कोंतु अदर क्रॉप मानकर प्रोडक्शन कमी गला केवल व्हीट प्रोडक्शन अधिक होला सो इट लेड टू इंटर क्रॉप डिस्पैरिटी ट्रू और फॉल्स ये इंटर क्रॉप डिस्पैरिटी मध्ये आनिला कि नहीं ये इंटर क्रॉप डिस्पैरिटी आनिला कि नहीं यस और नो ट्रू एवरीवन ट्रू समझते ट्रू अपर्णा शांति सौदामिनी लिप्सा मानस यू जॉइंड लेट you are a very regular student you attend all the classes हैला so inter eta green revolution intercrop disparity true or false true so kona what is the correct answer both are correct what is the correct answer here both are correct हाँ कि नहीं एनी डाउट यदि डाउट अच्छा भीतर को तब नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हमें माइनस फोन चार्ज नथला नो प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होची ठीक है बिकॉज़ ऑफ हेवी रेनफॉल बहुत बड़े जगह बहुत अधिक रेनफॉल होची सिपाई सो इटी आंसर लिखा है ग्रीन रिवॉल्यूशन फोकस्ड ऑन पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश सो रीजनल डिस्पैरिटी वाज देयर फोकस्ड ऑन व्हीट ओनली सो अदर क्रॉप्स वर नेग्लेक्टेड so other crops were neglected next question consider following statements and identify right ones in MIS share from state government is 75% এবং नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मानकर शेयर एक होची नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मानकर शेयर केते 50% नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रो शेयर 50 एवं अदर स्टेट रो एटा कोची केते 75 ट्रू और फॉल्स कौन बेटा MIS ऊपर एनी आइडिया अबाउट MIS MIS रो फुल फॉर्म होची मार्केट इंटरवेंशन स्कीम एटी किए इंटरवीन करिवो सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन करिवो केते बेले करिवो नाउ व्हेन देयर इज अ स्पेशल रिक्वेस्ट फ्रॉम द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज केते बेले नहीं देयर इज अ चांस ऑफ फॉल इन मार्केट प्राइस यदि मार्केट प्राइस रिड्यूस हो जाए कौन कहली जदि मार्केट प्राइस रिड्यूस हो जाए सेही समय रे सेंट्रल गवर्नमेंट रो रिकमेंडेशन सॉरी स्टेट गवर्नमेंट बाय यूनियन टेरिटरी रो रिकमेंडेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट एटी इंटरफेयर करियो बुझियला so loss टा equally that will be taken by the central government and the state government
it will be taken by both the central government and the state government. बुझेला ना डाउट अछि 50-50 लॉस टा केते 50-50 सेंटर केते ना वो सेंटर रा केते 50 स्टेट रा केते ना स्टेट रा 50 बट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट केस रे सेंटर नव 75 स्टेट नव केते ना 25% सेंटर 75 स्टेट केते 25% बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये ऑन MIS सो MIS केते वाले इंटरवीन हुई कहली ना व्हेन केते वाले होची MIS इंटरवीन मार्केट इंटरवेंशन स्कीम एटा केते वाले आसुची एटा आसुची ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी कोन पई ना फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हाट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ पेरिसेबल प्रोडक्ट्स फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ पेरिसेबल गुड्स के हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कोन कहली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रोडक्शन जेतबेले डिक्रीज हे जाय प्रोडक्शन रे तो लॉस होबार देखा जाय सेतबेले MIS इंटरवीन करा जाय सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवीन करा जाय इन प्राइस डिक्लेरेशन लाइक MSP एंड प्रोक्योरमेंट प्राइस मु कहिबे MSP कोन प्रोक्योरमेंट प्राइस कोन so when there is a fall in the market price then this is interference of the central government so it kete loss kete sahiba na 50-50 central 50 state 50 but north eastern state case रे this is a special condition जोटी 75 सेंटर और 25 स्टेट नबो ताले मते वर्तमान आंसर कोन हबो कोन ताले वर्तमान आंसर कोन हबो कोन समस्त क्विक कोन हबो कोन इन MIS clear from state government is 75% true or false in north eastern state it is 50% true or false समस्त बुझी पारले वर्तमान क्वेश्चन को समस्त वर्तमान कांसेप्ट बुझिले कांसेप्ट में दिस बुझे गला आंसर करंतु क्विक जल्दी कहवा बोथ आर करेक्ट मु कहि देली बा आंसर मु कहि सलेनी बुझेवा बेले मु आंसर कहि सलेनी बुझेवा समय रे मु आंसर कहि सलेनी पुनी नेक्स्ट आज एग्रीकल्चर ऊपर डिस्कस करू इंपोर्टेंट कांसेप्ट आसंदा काली इंडस्ट्री ऊपर डिस्कस करियो आज प्राइमरी सेक्टर गला काली के सेकेंडरी सेक्टर डिस्कस करियो हां कि नहीं काली के सेकेंडरी सेक्टर डिस्कस करियो ये जो क्वेश्चन डिस्कस करू जे वेदर दिस क्वेश्चंस आर हेल्पफुल और नॉट ये क्वेश्चन समस्त को हेल्पफुल होउची ए क्वेश्चन समस्त को हेल्पफुल होउची कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आसुची बुझी पारुचंती यस ओके वेरी हेल्पफुल बहुत बढ़िया लेटी समस्त को बोथ आर इनकरेक्ट काहे कि इनकरेक्ट हला बुझियला ना एठी देखिला हमें MIS रे स्टेट रे शेयर केतने हम कहली 50-50 एठी ये कहूची नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एटा 50% नो है इट इज एटा कितने स्टेट रे शेयर केते ना ओनली 25% अदर रे 50 सो बोथ आर इनकरेक्ट 1 and 2 both are incorrect here clear एडी डिस्क्रिप्शन भी मु देइची यू कैन डाउनलोड दिस आफ्टर द क्लास एको समस्त डाउनलोड करि परिबे ये PDF को क्वेश्चन आंसर जहां मु लेखुची विथ एनोटेशन नोट्स सब डाउनलोड करि परिबे आफ्टर क्लास डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे सब लेखाइ सब जिंस डिस्कस कराइ टेलीग्राम चैनल रू डाउनलोड करि परिबे नेक्स्ट आउ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट ऊपर डिस्कशन करिबी रिलेटेड टू SSI स्मॉल स्केल सेक्टर ये कुछ 1997 रे RBI सेटअप कले गोटे कमिटी जहां होची SL कपूर कमिटी कोन कहली SL कपूर कमिटी कोन पई ना टू मेक रिकमेंडेशंस ऑन व्हाट को रिलेटेड रिकमेंडेशन करिया पई मानस नोट्स बनौते नोट्स बनले तो बहुत बढ़िया दोज हु आर मेकिंग नोट्स आउट ऑफ दिस क्लास डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल नोट्स बहुत हेल्पफुल हो फ्यूचर नोट्स जे करते बहुत भलो ये कहूची SL कपूर कमिटी को रिलेटेड रिकमेंडेशन देथिले रिलेटेड टू ये सब गुडा का स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऊपर कहूची देखो ये बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट ये भी कहूची स्मॉल स्केल ये भी स्मॉल स्केल ये भी स्मॉल स्केल ये भी स्मॉल स्केल सो ये कहूची क्रेडिट टू स्मॉल स्केल ये कहूची लेबर फोर्स टू स्मॉल स्केल थर्ड ऑप्शन कहूची टेक्नोलॉजी टू स्मॉल स्केल फोर्थ ऑप्शन कहूची सब्सिडी टू स्मॉल स्केल
फोर्थ ऑप्शन कौन कहूँ सब्सिडी टू स्मॉल स्केल ताने देखो ये क्वेश्चन कितने टिपिकल अच्छे कष्ट क्वेश्चन नुहे कष्ट अच्छी कि कष्ट नुहे एटा टिपिकल क्वेश्चन ये स्पेसिफिकली जानवा चाहूँ वेदर यू हैव नॉलेज ऑन दिस पर्टिकुलर कमिटी और नॉट एग्रीकल्चर पढ़ला बेले खाली एमती स्किप कर देछन ना क्लियरली पढ़ी दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्वेश्चन हाँ कि नहीं लिप्स ऑफ फॉरेन नोट्स पढ़छ बहुत बढ़िया सो एटी ये कहूँ क्रेडिट ना लेबर फोर्स ना टेक्नोलॉजी ना सब्सिडी सो एसएल कपूर कमिटी एटा क्लास रे मु डिस्कस करछि इट इज रिलेटेड टू क्रेडिट दिस इज रिलेटेड टू inadequate credit to the small scale sector small scale sector रे कोन हुई ना क्रेडिट टा माने जति ठीक होवर न पहुंचे क्रेडिट ताले कोन हो क्रेडिट इज इंपोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमें पढ़िछे क्रेडिट इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो कि नहीं क्रेडिट इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल ऊपर हम पढ़ुथिले फर्स्ट क्लास रे हम डिस्कस करछि सो या बिना फंक्शन करि परिबन के प्रोडक्शन नै परिबन सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को क्रेडिट प्रॉपर न मिली परथवा कारणरू से माने ग्रो करि परना से मानकर ग्रोथ होउन एई पर्पस रे 1997 ने आरबीआई गोटे कमिटी सेटअप करे जार नाम अछि एसएल कपूर कमिटी टू मेक recommendations जी recommendation दबा related to inadequate credit to the small scale sector inadequate credit to the small scale sector so what is the correct answer is a hela then how would committee for next question eti mu dechi abid hussain committee 1997 ne asila it is related to who reform abid hussain committee it is related to reform in which sector को रिफॉर्म टाको हमें कहू जेटी अबिड हुसैन कमिटी रे डिस्कस करछे and this is related to reform in which sector and reform in DRT sorry small scale industry it is related to small scale industry ये रिकमेंडेशन को रिलेटेड दिले ना केमती ये डेवलप करि परबो एग्रीकल्चर सॉरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गुडा को केमती डेवलप करिवे जा हमें एसएसआई कहू now SSI हम पे important काहे कि ना they are basically backbone of rural economy को जदि हम डेवलप करिया पई चाहू छे ताले हमको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करिया पई पड़ी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करिया पई पड़ी एग्रीकल्चर सेक्टर को अपलिफ्ट करिया पई पड़ी वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन एग्रीकल्चर इन मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करिया पई पड़ी एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी को इंक्रीज करिया पई पड़ी एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी को इंक्रीज करिया पई पड़िबो बुझौ कि ना एक्सपोर्ट रे कोन होची इंडिया रो हम फॉरेन कंट्री को पठौ छे सो ये कहू छी कि व्हेन वी हैव ऑप्शन टू सेल इन द ग्लोबल मार्केट then why to sell in the local market रे काई जाबे so let the product be sold in the global market so ए पॉइंट गुडा को बा ए रेमेडी गुडा को जदि हम ध्यान रे रखिबा ताहाले कोन हे परिबो then we can have a developed agriculture sector तेबे एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप करि परिबो तेबे ही एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप करि परिबो अदरवाइज ये डेवलप परिबो इज दिस क्लियर एई पर्यंत समस्त बुझिले आउ किछि क्वेश्चन को आसीबा हमें ता पूर्वरु किछि इंपोर्टेंट कांसेप्ट डिस्कशन जो कांसेप्ट डिस्कस करबी यार ऊपर क्वेश्चन करी एबी जो कांसेप्ट डिस्कस करबी तार ऊपर क्वेश्चन करबा एग्रीकल्चर इज मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्टर हमें देखिले सो ये प्री इंडिपेंडेंस हो व पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड हो एग्रीकल्चर सेक्टर इट हैज इट्स ओन रिलेवेंस सो जे हमें प्री इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड देखिबा यदि हमें प्री इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड देखिबा एई समय रे एग्रीकल्चर सेक्टर को टाइप रो थिला ना एग्रीकल्चर सेक्टर इट इज कंप्लीटली अंडर डेवलप्ड थिला कोबेला थिला इट वाज कंप्लीटली अंडर डेवलप्ड मैकेनिकल एग्रीकल्चर इज सब्सटेंशियल फॉर्म प्रैक्टिस होथिला substantial माने for own consumption self consumption पई practice होतला इटी only for self consumption it was practiced then आउ कोन होतला जदि हम एटी देखिबा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन लो बा अनस्किल्ड लेबर एटी काम करथले को माने अनस्किल्ड लेबर lack of use of technology कम टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करा होतला now after 1947 what was the condition same condition it was continued post independence रे मध्ये same condition एटी कंटिन्यू करा कोन कहली पोस्ट इंडिपेंडेंस रे मध्ये same condition एटी कंटिन्यू करा now 1947 रे हमें पीएमएफ हिसाब रे कहा को डिक्लेयर करले पढैतली लास्ट क्लास रे इंडस्ट्री ना एग्रीकल्चर व्हिच वन इज डिक्लेयर्ड एज द पीएमएफ
Which one was declared as the prime moving force? 1947, just after independence. whose sector को हमें पीएमएफ हिसाब से डिक्लेयर करते? I hope everyone remember. इंडस्ट्री को एठी हमें डिक्लेयर करले पीएमएफ हिसाब से. तापर कोन चेंज करले केबे ना इन द ईयर 2002 हमें चेंज करले कोन ना हमें डिक्लेयर करले पीएमएफ के ना पीएमएफ होची एग्रीकल्चर. पीएमएफ के नाम देखले पीएमएफ होची एग्रीकल्चर केबे ना 2002. बिफोर 2002 जते गुडे वर्ल्ड रो जते गुडे फिलोसफी बा आइडियोलॉजीज अछंती लाइक वर्ल्ड बैंक हे गला बा आईएमएफ हे गला से माने कोन कंसीडर करथले से कहथले एग्रीकल्चर इज अ सिंबल ऑफ बैकवर्डनेस. एग्रीकल्चर इज अ सिंबल ऑफ बैकवर्डनेस. मानकर ऑब्जेक्टिव कोन रहितला नै बैकवर्डनेस सिंबल को हटिया पई इंडिया को गोटे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करिया पई इंडिया को गोटे फॉरवर्ड बा डेवलप्ड मॉडर्न कंट्री रे परिणत करिया पई मानकर ऑब्जेक्टिव थिला. इंडिया को मॉडर्न कंट्री रे परिणत करिया पई मानकर ऑब्जेक्टिव थिला. बुझिउ छिना नै तेनु एग्रीकल्चर जो बैकवर्डनेस थिला ये बैकवर्डनेस को रिमूव करिया पई इंडिया अडॉप्ट करथिला पीएमएफ 1947 ने काको ना इंडस्ट्री को. बट हमको देखियो को मिलला ड्यूरिंग द इन द मीन टाइम पीरियड एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होई पारिलानी. सो फूड इनसिक्योरिटी वाज देयर. एटी हमको कोन देखियो को मिलला एटी हमको देखियो को मिलला फूड इनसिक्योरिटी. सेति पई कहिथिल लास्ट टाइम कोन पीएल 482 प्रोग्राम असला स्कीम पीएल 482 स्कीम जोतरे हमें इंपोर्ट करले फॉरेन कंट्री मानकर फूड ग्रेन्स. सो इंडिया रे एटी गोटे नेगेटिव इमेज रहिला जहा को जाय कोना बेगिंग बाउल कंट्री. इंडिया को कोन कहले अदर कंट्री माने कहले एटा गोटे बेगिंग बाउल कंट्री. बेगिंग बाउल माने कोन बहुत अपमानजनक शब्द ये भारत में ये समय थिला. सो जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन इंडिया tried to import foods from foreign countries to meet its food security, India was blamed as a begging bowl country. That's why the Indian leadership they decided to develop the Indian agricultural sector to increase self-sufficiency in food production to achieve accessibility, availability and affordability in food grains, which is known as food security. जाको फूड सिक्योरिटी बोली कहा जाय. सो इंडियन लीडरशिप डिसाइड कला कि हमें एक्सेसिबिलिटी बढ़ेबु, यील्ड बढ़ेबु, पर हेक्टर यील्ड इंक्रीज करबु, टेक्नोलॉजी को यूज करियो लागबु, क्रेडिट फैसिलिटी इंक्रीज करबु सो दैट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंडिया रे ही बढ़िबो. सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ इंडिया, सेल्फ सफिशिएंट ऑफ इंडिया. इंडिया रे जति के प्रोडक्शन होबो इंडियन माने ताको यूज करियो प्लस हमें फॉरेन को एक्सपोर्ट करबु. सेम जिंस जोटा हमें देखितले कि इंडिया को बेगिंग बाउल कंट्री कहला 1947 रे just 2 years back during the pandemic time period when the entire world economy was devastated and destroyed because of the COVID-19 pandemic. Same time period re India has developed countries like US and UK. India supplied, India exported different type of medicines and medical care products to the developed countries. So it is a clear proof that India has repaid the loan which it has taken from the developed countries just after independence. 1947 ପରେ इंडिया एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इंपोर्ट करथिला. वर्तमान 2020 रु 22 23 भितर इंडिया मेडिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कला को कंट्री को एक्सपोर्ट दैट वाज अ हेल्प. से समय तो इंडिया रो बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इनएबिलिटी इंडिया वाज नॉट एबल टू प्रोड्यूस मोर फूड ग्रेन्स. सो फूड इनसिक्योरिटी वाज देयर इन इंडिया. नो एक्सेसिबिलिटी, नो अवेलेबिलिटी, नो अफोर्डेबिलिटी ऑफ द फूड ग्रेन्स. And during that time period when that was the time other countries they should stand behind India. They should shoulder responsibility of India's food security. International organizations like IMF, World Bank, United Nations, they are talking about sustainable development goals, millennium development goals. So that was their responsibility to extend their support hand to a least developed countries or a newly formed democratic country like India. जो समय रे समानक रेस्पोंसिबिलिटी को समान डिस्चार्ज करनतले begging bowl country कहउतले कहा को इंडिया को कहउतले and India repaid the loan. The same loan was repaid by India during the pandemic time period when the economy of the entire world it was devastated and destroyed. So it shows India's commitment towards international development. It is not only mentioned in your constitution. Constitution could mention it international development by will contribute. Any answer? Constitution को provision ने mention है for the international development will contribute. So it proves India's contribution to the international or to the global economy. यहाँ पूर्व no one can discount India's contribution to different fields of science, architecture, mathematics or humanities. ये field को India contribution को no one can deny. Our contribution to mathematics, our contribution to trigonometry, invention of zero, invention of trigonometry. ये सब कहाँ रो contribution थिला? ये सब India contribution थिला to the entire world.
sculpture, architectural development, civil engineering, metallurgy, chemistry, mathematics, biology, ये सब फील्ड को इंडिया कंट्रीब्यूशन इज मैक्सिमम एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज. ट्रिगोनोमेट्री इंडिया रू ही आरंभ होइछि तो यज्ञ पुत्र मनुष्य माने यज्ञ करथले सेउटु ही आरंभ होइछि. जीरो कथा समस्त जानिचंदी. चरक संहिता सुश्रुत संहितार कथा समस्त जानिचंदी हां कि नहीं. मेडिसिन रिलेटेड ट्रीटाइज चरक संहिता सुश्रुत संहितार कथा समस्त जानिचंदी. प्लास्टिक सर्जरी कथा समस्त जानिचंदी. ये सब इंडिया रू ही डेवलप होइछि. ना वर्तमान देखंतु हजार हजार वर्ष तळे जो स्कल्पचर बा आर्किटेक्चर इंडिया रे तयारी हेतिला. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ श्री जगन्नाथ टेंपल पुरी. तार गोटे साइड को मरामती करिया पई गोटे साइड को मरामती करिया पई सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आईआईटी मद्रास पीपल आर कमिंग, technocrats are coming, and they are not able to maintain a part of the temple. Now think, before 1000 years ago, how our ancestors were able to make such type of buildings. Okay, so this is the condition, this is our contribution to the entire world. Now the world cannot discount, they cannot neglect India's contribution to the development of the entire human being or humankind, human being or humankind. But because of diplomacy, because of international politics, many times we are finding there are certain type of neighbors known as, there are certain type of neighbors जो मानो का मैं कौन कहूँ unfriendly neighbors or volatile neighbors. They are blaming India. They are blaming India. They are blaming Indian people. Many times Indian people, they are restricted from entering to foreign countries. More security concern, more security strategies for Indian people. So Indian students, they are not allowed for higher studies in foreign countries. Indian businessmen not allowed for doing business in foreign countries. So there is a discrimination on the ground of race, on the ground of place of work, or on the ground of ancestor. किए को region को belong करुछि. सेही ground रे, race ground रे Indians are discriminated in the foreign soil. But जदि हमें देखिबा, श्री अरविंदଙ୍କର बही पढिबे, श्री अरविंद लिखिथिले कि दिन आसिबो दिने भारत जननी समग्र विश्व भारत को तार स्कंधरे बहन करिवो. दिन आसिबो, समय आसिबो जेउ दिन भारत जननी समग्र विश्व भारत को तार स्कंधरे बहन करिवो. And this is the time जोटी it has come true. Now think about all the international or global corporate sector. Think about all the corporate sector. Key administration person, key management person in the top post, all Indians are there. Think about top business in world. बड़ बड़ कंट्री टॉप बिजनेसमैन मान को ऊपर देखंतु को मान लीड करछथि, इंडियन मान लीड करछथि. फॉरेन कंट्री पॉलिटिक्स देखंतु सेठी बड़ बड़ पोस्ट रे जो ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट अछि बा पॉलिटिकल पोस्ट अछि को मान अछंती, इंडियन मान अछि. सो द फोरकास्टिंग डन बाय आवर फोरफादर्स, इट नाउअडेज इट कम्स टू ट्रू. ये सत होबा को जाउछि एवं ऑलरेडी इट हैज बीन प्रूव्ड. एंड नियर फ्यूचर रे मध्ये हमको देखिबा को मिलो जो तरी इंडियन मानकर कंट्रीब्यूशन हमें आउरी अधिक और अधिक देखिबा टू ग्लोबल इकोनॉमी, टू ग्लोबल पॉलिटिक्स. भारत वर्तमान विश्वगुरु होबा को जाउछि. वी आर टॉकिंग अबाउट मेकिंग इंडिया विश्वगुरु. विश्वगुरु अर्थ कोन? वी आर गोइंग टू शोल्डर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज, सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज, empowerment related issues, vulnerability related issues. Just before a couple of years, in an international convention, this was a great commitment by the Prime Minister of India that India is going to shoulder responsibility of the vulnerable section. Of the vulnerable section throughout the world, those who are unempowered, it is responsibility of India to raise their voice, to protect their human rights. We're talking about protecting human rights of whom? Human rights of the vulnerable section of the society. Of the vulnerable section of the society. So this speech made by the Indian Prime Minister proves that India is going to take responsibility or shoulder responsibility of the unempowered section throughout the globe. So this is about international development. This is about socio-economic or socio-political development of the world, which is to be shouldered by India. बुझ पारछन कि नहीं? So ये जो concept है begging bowl नो concept, it has been completely rephrased or changed. It has completely changed इजे वर्तमान, and during pandemic time period we have proved it. So 2002 रे हमें PMF कले कहा कि ना agriculture, we declared agriculture as the prime moving force. We declared agriculture as the prime moving force in the year 2002. Then onwards, global market, international market, we started sharing agro products. We started exporting agro products to foreign countries.
to foreign countries, हाँ कि नहीं? There are many products many Indian products having very good international demand. Let's talk about Indian onion. Indian onion has a huge market in the Middle East countries. So we export on day-to-day basis tons and tons of Indian onion. They are exported to Middle East countries, having a very good demand. Indian food products like Indian fruits like Indian apple being exported. Indian grapes. So many major countries like UK, USA, Bangladesh, Australia, Nepal, Bhutan, they import from India. So Indian horticultural products, Indian fruits, Indian vegetables, they have a very good market in the international market. They have a very good demand in the international market. So we export different type of products, including flowers. The floricultural section, floricultural sector, floriculture demand मध्ये Indian flower गुड़ाकर international market रे बहुत अधिक अछि. हाँ कि नहीं? Nowadays India tops तो कहीं की ये टॉपिक ऊपर मैं कहीं के डिस्कस करची. Nowadays we are giving importance to agricultural sector. वो सेक्टर को ना agricultural sector को हमें अधिक और अधिक importance दोचे वर्तमान. हाँ कि नहीं? Agriculture sector को हमें अधिक और अधिक importance दोचे. Agriculture sector को we consider this as an industry. Secondary sector or manufacturing sector हिसाब रखते कुछ है. Where we will be taking certain inputs, we will process it, we will find out the output, and then we will export it to the foreign market. So these are benefits of agricultural sector. So agricultural sector हमको कौन provide करिवो ना most important fact हमको provide करिवो, that is food security. कौन दवाई हमको ना, it will provide food security. What is the meaning of food security? Food security को मु 3A रे बुझाउची, समस्त सुनिबे. 3A कौन ना? 3A होची accessibility, availability and affordability. Accessibility, availability and affordability. Accessibility रो अर्थ कौन? Accessibility रो अर्थ होची throughout the year समस्त को एटा access करि पड़थवा दरकार, ये मिलुथवा दरकार. Availability रो अर्थ होची throughout the year available होथवा दरकार. वर्तमान आलू रो प्रॉब्लम चलची ना इंडिया. आलू रो प्रॉब्लम चलची. आलू केजी केते लानी 45-50 rupees per kg. So it is not affordable. This is not affordable, again not available, even not accessible by all. सब जगह ये मिलू ही नहीं. So why? What is the problem? आलू production कौन ओडिशा रे होनी? The problem is with the cold storage. We don't have a cold storage and we don't have a more yielding variety of seeds. High yield variety seed हमें use करूँ. यदि production अधिक होता है कौन कहली? यदि एटी production अधिक रो अधिक होता, more production हेले more यदि yield अधिक होता, ताले हमें आपको store करके रखी पारंते. कौन करंते आपको हमें store करके रखी पारंते. Throughout the year it will be available, but throughout the year हमें आपको available करी पारू नहीं. So food security हमें लिखुचे accessibility, availability and affordability of food grains. इटा available है कि रहिवा दरकार. हाँ कि नहीं? So food security is important. Food security required or not? India रे just after independence हमको food insecurity देखियो पड़तिला. वर्तमान to some extent in case of cereals we have food security, but other product रे हम पाकर food security एवे भी नहीं. Though we are developing, we need to revisit about our agricultural skills. We have to revisit about our agricultural skills. So food security is important. So देखिए next point को जिबा हमें agriculture sector केते ना GDP रो 17.5% contribute करूछ. 17.5% को contribute करूछ. So agriculture रो share contra gross income को gradually decrease ही जाउछ. Gradually decrease ही जाउछ. काहे कि ना जदि हम देखिबा urbanization बा urban area रा definition कोन? Census report देखिबे urban area कोन कोडी define हिच कहले census report. Census 2011 report देखिबे एटी define हिच urban area. ये कहूची 75% रो अधिक workforce, 75% अधिक workforce they should be in non agro sector. कोड रहबा दरकार non agro sector, माने agriculture sector न रहबा दरकार. यार अर्थ होची this census report gives a clear cut vision that if we are practicing agriculture, then this is a symbol of backwardness. ये कहूची. So urbanization definition जदि कहूची 75% workforce in non agro sector, in non agricultural sector, I mean it shows agriculture again is a symbol of backwardness, जोटा को हमको mitigate करिया पे पड़ियो. Agriculture sector भी income ही परिबो like secondary and tertiary sector.
लोक माने वर्तमान देखुथिबे पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम ओडिशा टू अदर स्टेट्स सूरत रे काम करछन्ती चेन्नई रे काम करछन्ती दादन करछन्ती सेठी केते टंका इनकम करछन्ती if they come back to Odisha and they start their own agro entrepreneurship by agricultural entrepreneurship that someone start करछन्ती they can earn more than 2 lakh rupees per month and most important factor होउची they will increase contribution to the GDP per capita income बढ़िबो national income बढ़िबो production बढ़िबो and hence GDP and hence national income and hence per capita income आउ कोन बेनिफिट मिलियो ना एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी कोन मिलियो कहली इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज माने एम्प्लॉयमेंट दे परिबे अन्य मान सो सेंसस रिपोर्ट अनुसार जदि हम देखियो अर्बन एरिया रे डेफिनेशन होची जोटी नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर रे हम काम करछ जोटी हम नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर रे काम करछ बुझिला ई पर्यंत और एनी अदर डाउट एनीवन एनी डाउट क्विक आगु जिबा So India now become a agri exporter in few crops, cotton, rice, meat, oil, spices, gram ये सब sugar हम export करते to foreign countries. Export import ऊपर मैं discussion करी on different topic. ହେଲା ତାହେଲେ आगु जिबा तापर हम टाइप ऑफ क्रॉप आसीबा खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप एटा समस्त जानिथिबे खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप या ऊपर समस्त पढ़िथिबे बहुत इंपोर्टेंट मानस बुझी पारला बहुत बढ़िया आदर्श अन्य माने अपर्णा शांति खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप ये स्पेशल टर्म व्हिच इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द क्रॉपिंग सीजन को सीजन ने हमें सीड सोइंग करूचे एवं को सीजन ने हमें हार्वेस्ट करूचे एवं को सीजन ने हमें हार्वेस्ट करूचे सो एग्रीकल्चरल क्रॉप योर इंडिया रे केते केते ना फ्रॉम जुलाई रु जून दीटा इंपोर्टेंट क्रॉपिंग सीजन हम पाकर अछि गोटेला खरीफ क्रॉप आ गोटेला केते ना रबी क्रॉप आ गोटे कोन ना रबी क्रॉप कोन कहली खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप खरीफ क्रॉप ता यार सीजन केते ना फ्रॉम जुलाई टू अक्टोबर केबे केबे ना फ्रॉम जुलाई टू अक्टोबर को समय रे त साउथ वेस्ट मानसून आछि से समय खरीफ क्रॉप होछि रबी क्रॉप ता अक्टोबर रु मार्च एटा केते ना नॉर्थ ईस्ट पर रिटर्निंग मानसून जेतबे मानसून रिटर्न करूची से समय रे होछि कोन कहली तळे मानसून रिटर्न करूची से समय रे होछि मार्च रु जून भीतर जो क्रॉप हुए ताकू जैद क्रॉप्स बा जेड क्रॉप्स बोली मध्ये कुआ जाय ताकू जायद बा जेड क्रॉप्स बोली मध्ये कुआ जाय सो पाकिस्तान और बांग्लादेश मध्ये ये दीटा टर्म यूज करंदी खरीफ और रबी ये दीटा अरबिक वर्ड रो अरबिक लैंग्वेज रो आसीची अरबिक टर्म रो खरीफ रो अर्थ कोन ना ऑटम रबी रो अर्थ कोन ना स्प्रिंग खरीफ रो अर्थ कोन कहली ना खरीफ रो अर्थ होची ऑटम एवं रबी रो अर्थ होची स्प्रिंग खरीफ क्रॉप रो किछि एग्जांपल राइस मेज सोरगम बाजरा फिंगर मिलेट्स बा जाको मैं रागी कहूचे हरड़ सोयाबीन ग्राउंडनट ये सब दीज आर एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप रबी क्रॉप रो एग्जांपल कि ना व्हीट बार्ली ओट्स ग्राम लिंसीड मस्टर्ड ये सब दीज आर एग्जांपल ऑफ रबी क्रॉप्स तापर आसीबे हम बर्तन इंपोर्टेंट पॉइंट को जोडा मु डिस्कस करबा जे कहतली एमएसपी एफआरपी एंड प्रोक्योरमेंट प्राइस ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहले प्रथम कथा हम कोन बुझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस एनी आईडिया अबाउट इट ना जी प्रथम तर सुनछन एनी आईडिया अबाउट एमएसपी ना जी फर्स्ट टाइम क्विक एटा दिस इज द मार्केट इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट किए एटी इंटरवेन करूची ना मार्केट इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट कोन पई ना टू एंश्योर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर किए ना फार्मर कोन एंश्योर करबो ना इफ देयर इज एनी शार्प फॉल इन द फार्म प्राइस कोन कहली इफ देयर इज एनी शार्प फॉल इन द फार्म प्राइस यदि फार्म प्राइस का ऑल ऑफ सडन रिड्यूस हो जाउची यदि फार्म प्राइस का रिड्यूस हो जाउची ताहले ये फार्मर जेमति डिस्ट्रेस लेवल को न जाऊ स्ट्रेस को न आसु सेति पई तक प्रोटेक्ट करिया पई ये एमएसपी टा डिक्लेयर करा दिस इज द मिनिमम प्राइस रे ये कोन इंक्लूड करूची ना एको ये कोन इंक्लूड करूची ना ये इंक्लूड करूची फार्मर जति के लेबर देची मिनिमम कॉस्ट जति खर्च होइची लाइक सीड पई जति के टंका से खर्च करिची प्लस
सीड पई जति खर्च करिछि तार इरिगेशन पई जति खर्च करछि ए सब गुडा कटी इंक्लूड करूछि हैला तो एमएसपी डिक्लेयर के करूछि ना ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीएसईपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस ये डिक्लेयर करूछि कोन ना एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस सो यार ऑब्जेक्टिव मु कहली टू सपोर्ट फार्मर्स फ्रॉम डिस्ट्रेस जदि ऑल ऑफ सडन प्राइस डिक्रीज हो जाउछि एमएसपी कोन करियो ना मिनिमम प्राइस जोटा प्रोवाइड करा जो फार्मर सो दैट फार्मर रो बेसिक किछि लॉस हो ना यदि मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स बिलो द अनाउंस्ड मिनिमम प्राइस ड्यूरिंग द मोर प्रोडक्शन then government agencies they will procure or they will purchase all the commodity जहाँ प्रोडक्शन करथिबो ये सब गुडा के नै जो ना गवर्नमेंट नै दैट मिनिमम प्राइस रे गवर्नमेंट एटी परचेज करते तो 1967 ने 66 67 ने wheat पई प्रथम एमएसपी दिया गला ता परटू as of now MSP is being provided for 24 commodities सातटा cereals included एथिरे कितरा कहली 7 cereals are included 5 pulses are included 8 oil seeds are included 8 oil seeds are included then को क्रॉप एमएसपी कोन इंक्लूड करूची ना 7 cereals के ना paddy wheat barley jowar bajra maize ragi याकू इंक्लूड करूची आउ कोन अछि ना 5 pulses gram horror मूंग उड़द lentil 8 oil seeds groundnut mustard toria soybean sunflower sesame ये सब को इंक्लूड करूची आउ कोन ना कोपरा रॉ कॉटन रॉ जूट वर्जिनिया फ्रूक्योड VFC टबाक ये गुडा को सब इंक्लूड होची कोतरे ना कमोडिटी एटी नाम मन के दरकार नै हम जानिबा दरकार खाली 24 कमोडिटीज केतेटा कमोडिटी रे प्रोवाइड करछ एमएसपी गवर्नमेंट ना 24 कमोडिटीज एवं को सेक्टर रे बा को फील्ड रे ना सीरियल्स रे दोची पल्सेस रे दोची एतिरे दोची ऑयल सीड रे दोची ए पॉइंट गुडा का हम पे इंपोर्टेंट सो एमएसपी इज फिक्स्ड एट इंसेंटिव लेवल किछि स्पेसिफिक पर्पस को मेंटेन करिया पे कोन ना प्रथम ये कहूची टू इंड्यूस मोर इन्वेस्टमेंट बाय फार्मर्स इन द फार्म सेक्टर रे फार्मर अधिक रु अधिक इन्वेस्टमेंट करू कोन कहली फार्म सेक्टर रे फार्मर अधिक रु अधिक इन्वेस्टमेंट करू सेति पई एमएसपी डिक्लेयर करा जाय टू मोटिवेट फार्मर्स टू अडॉप्ट इंप्रूव्ड क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ये अडॉप्ट करू सेति पई करा जाउची to enhance production and thereby farmers farmer income को ये बढ़ो कौन कहले ये farmer income को increase करू एही कारण मानक पई एमएसपी डिक्लेयर करा जाउची सो यदि हमें ए गारंटेड प्राइस न मिले देन ऑटोमेटिकली फार्मर रो कंसर्न बढ़ी जिवो फार्मर ऊपर लोन बढ़ी जिवो वा फार्मर रो इनकम कमी जिवो फार्मर ऊपर यदि हम देखिबा एटी लोन बढ़ी जिवो एही कारण मानक पई गवर्नमेंट एमएसपी डिक्लेयर करताय बुझेला देन इज MIS कोन ना मार्केट इंटरवेंशन स्कीम एटा वर्तमान डिस्कशन कोथि इट इज वेरी मच सिमिलर टू एमएसपी इट इज इंप्लीमेंटेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय यूनियन टेरिटरी कोन पई कहा पई ना फॉर पेरिसेबल और हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स फॉर पेरिसेबल एंड हॉर्टिकल्चरल कमोडिटी पई इट आस MIS तक हम कहू जेतेबेल व्हेन देयर इज एट लीस्ट 10% इंक्रीज इन प्रोडक्शन और 10% डिक्रीज इन द प्रोडक्शन जति के प्रोडक्शन रेट चले छी जति सेतरे 10% इंक्रीज हुए बा जति सेतरे 10% डिक्रीज हुए ताहाले MIS आसी डिक्रीज हेले त आसी समस्त जानि पड़तथि इनकम बढ़िया पे इंक्रीज हेले कहीं के आसी इंक्रीज हेले सप्लाई बढ़ी जिवो सप्लाई बढ़िले ऑटोमेटिकली डिमांड कमी जिवो हां कि नहीं डिमांड कमी जिवो सेति पई एटा आसे 10% इंक्रीज और डिक्रीज पई सो स्पेसिफिक रिक्वेस्ट तो आसीबो स्टेट बाय यूनियन गवर्नमेंट रू की द स्टेट और द यूनियन गवर्नमेंट दे आर रेडी टू बियर 50% लॉस से माने 50% लॉस बियर करिया पे रेडी अछंती ताहाले एटा इंप्लीमेंट हो देन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मानक पई दिस इज 25% नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मानक पई केते एटा ना दिस इज 25% 75% दबो सेंटर प्रवासी पचार कि सर जदी what if the market price is below the MSP what happens if the market price falls below MSP so let me answer this question कौन हुए एटी यदि मार्केट प्राइस ता MSP टू कमी गला MSP होची मिनिमम सपोर्ट प्राइस एही कंडीशन में ही MSP दिया जाय मन कर मार्केट प्राइस अछि 20 टका 20 रुपीस पर केजी हैना MSP अछि केते ना MSP अछि 22 रुपीस पर केजी MSP टा कोन
एमएसपी रे गवर्नमेंट आश्योर करूची गवर्नमेंट कोन करूची एठी ना गवर्नमेंट आश्योर करूची कोन आश्योर करूची गवर्नमेंट ना जदी मार्केट प्राइस कमी जाउची जदी मार्केट प्राइस रिड्यूस हो जाउची फार्मर को लॉस न हो फार्मर को लॉस न होबा पई ये एमएसपी दिया होची फार्मर को लॉस न होबा पई एमएसपी दिया होची मार्केट प्राइस जदी 20 टका ताल ये कहूची मिनिमम सपोर्ट प्राइस केते ना 22 टका सो फार्मर एटे कहा को बिक्री करिवो गवर्नमेंट को दबो ना प्राइवेट को जाई दबो प्राइवेट एजेंसी को दबो मार्केट मार्केट रे बिक्री करिवो ना गवर्नमेंट को दबो एमएसपी रे किए नबो एमएसपी रे नबो गवर्नमेंट सो फार्मर कम टंका रे 20 टंका रे एठी बिक्री न करू एही कंडीशन रे बा फार्मर को लॉस न हो एही कंडीशन रे ताको एमएसपी प्रोवाइड कराउची एवं गवर्नमेंट तार जेते प्रोक्योरमेंट थिबो जेते प्रोडक्शन थिबो फार्मर रो सब गुडा कटी परचेस करके नै सो फार्मर रो लॉस न होवा पई एमएसपी गवर्नमेंट प्रोवाइड करची क्लियर बुझिला बुझिला ना डाउट ठीक है ताले हम नेक्स्ट कांसेप्ट बुझबा एमआईएस समस्त बुझिले एमएसपी तो बुझितले एमएसपी पर एमआईएस बुझिला मार्केट इंटरवेंशन स्कीम केते होची एटी क्वेश्चन कोन आसीबो पहिले इंटरवेंशन स्कीम ऊपर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मानक पई एटा केते अछि अदर स्टेट मानक पई केते अछि सो एमआईएस रे केते बेले व्हाट इज द कंडीशन फॉर एमआईएस कंडीशन होची जदी मिनिमम प्रोडक्शन ता 10% इंक्रीज हेची बा 10% डिक्रीज हेची एवं जदी स्टेट करेस्पोंडिंग स्टेट बा यूनियन टेरिटरी एग्री करूची 50% लॉस सहिया पई जदी एग्री करूची 50% लॉस सहिया पई ताले एमआईएस हे करियो बट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मानक केस रे केते ना 1/4 बा 25% नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मानक केस रे केते ना दिस इज 25% गला एमआईएस बुझिले समस्ते तापर आगे बुझिबा प्रोक्योरमेंट प्राइस 1966-67 रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीपी पे प्रोक्योरमेंट प्राइस डिक्लेयर कला प्रोक्योरमेंट प्राइस इज मोर देन एमएसपी procurement price is more than MSP then what is the difference MSP टा केते बेले डिक्लेयर हुए ना MSP टा डिक्लेयर हुए MSP केते बेले डिक्लेयर हुए ना बिफोर सोइंग मंजी बुनिबा पूर्वरु MSP टा डिक्लेयर हेजी प्रोक्योरमेंट प्राइस टा केते बेले ना जस्ट बिफोर हार्वेस्टिंग इंपोर्टेंट प्रोक्योरमेंट प्राइस केते बेले ना बिफोर हार्वेस्टिंग MSP केते बेले ना बिफोर सोइंग सो पर्पस कोन एटी प्रोक्योरमेंट प्राइस डिक्लेयर करबा बेसिक पर्पस होची टू एनकरेज फार्मर्स on point to encourage farmers to sell a bit more and get encouraged to produce more अधिक प्रोडक्शन करिया पई होती आर बेसिक ऑब्जेक्टिव यान छि कोन ना प्रोक्योरमेंट प्राइस बुझिला गवर्नमेंट होछि प्रोक्योरमेंट प्राइस क्लियर तापर हम आसीबा फूड फिलोसफी इन इंडिया तापर आसीबा हम फूड फिलोसफी इन इंडिया फूड फिलोसफी रे एको डिफरेंट फेज रे मोटी डिवाइड करछि तो फूड रे डिमांड कोन थिला रिक्वायरमेंट कोन थिला अवेलेबिलिटी कोन थिला एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी कोन थिला हम एटी डिस्कशन करबा सो फर्स्ट फेज देखिबा ये फर्स्ट फेज केतेबेल ना आफ्टर इंडिपेंडेंस इट कंटिन्यूड अप टू 3 डिकेड्स 1947 रु अप्रोक्सीमेटली जदि हम देखिबा 1980 पर्यंत ये कंटिन्यू हला ये समय रे बेसिक ऑब्जेक्टिव कोन थिला ना टू प्रोड्यूस मोर ऑलरेडी मु कहि सरछि टू प्रोड्यूस मोर फूड इनसिक्योरिटी वाज देयर आम पाखरे सफिशिएंट फूड सिक्योरिटी नथिला एक्सेसिबिलिटी नथिला प्रोडक्शन होनथिला बा यील्ड होनथिला प्रोडक्शन बढ़ेबा इंडिपेंडेंस परे गवर्नमेंट रो बेसिक ऑब्जेक्टिव थिला गवर्नमेंट रो बेसिक ऑब्जेक्टिव कोन थिला ना प्रोडक्शन बढ़ेबा जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस एही कारण पई त हम एक्सपोर्ट करूथिले अदर कंट्री मानको एक्सपोर्ट एठी हम अदर कंट्री मानको एही कारण पई त करूथिले सेति पई त इंडिया को कोआ जाउथिला बेकिंग बाउल कंट्री बेकिंग बाउल कंट्री एथि पई तो इंडिया को कोआ जाउतला सो एटी ऑब्जेक्टिव कोन रहला ये पीरियड रे ना यील्ड बढ़ो टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन टा किंती इंक्रीज हो यार ऑब्जेक्टिव थिला देन सेकंड फेज जदि हम देखिबा सेकंड फेज रे ऑब्जेक्टिव थिला कोन ना इकोनॉमिक एक्सेस टू फूड रो अर्थ होची अफोर्डेबिलिटी कोन कहलेटी यार अर्थ कोन ना अफोर्डेबिलिटी रो अर्थ हला ये अफोर्ड करि परिया दरकार प्राइस ता कम रे मिलवा दरकार जेमति वर्तमान आलू प्राइस ता 50 टका रे मिलुची मार्केट दैट इज नॉट अफोर्डेबल प्राइस एवरीवन कैन नॉट परचेज पोटैटो एट 50 रुपीस एवरीवन कैन नॉट परचेज एट 50 रुपीस सो अफोर्डेबिलिटी रो अर्थ होची समस्त अफोर्ड करि करथुवे सिटीजन अफोर्ड करि करथुवे जो मानको पाखरे कम टका इनकम होची पुअर पीपल दे शुड बी एबल टू अफोर्ड इटा ना सेकंड फेज रे हमको अफोर्डेबिलिटी रो क्वेश्चन आसे
सो बाय द एंड ऑफ 2000 ये कंडीशन खराब रो खराब पे चलला इंडिया रे कंडीशन एटी वर्षन नहीं चलेला कोन पई अफोर्ड हमें कहि करि पालेनी ना डिमांड अनुसार एटी सप्लाई नहीं डिमांड सप्लाई कोन मु आरंभ पढी एटी सप्लाई कमुची कोन पई ना सप्लाई एटी कमिबार प्रथम कारण होची लो यील्ड सप्लाई लेस कोन पई एटी सप्लाई कमुची ना सप्लाई डिक्रीज होबार प्रथम कारण होची लो यील्ड कम प्रोडक्शन होची एटी आउ कोन होची लो यील्ड सहित लो यील्ड काहे केला बिकॉज वी हैव adopted नॉन टेक्निकल एग्रीकल्चर हम एटी अडॉप्ट करछे आउ कोन होची सप्लाई कोन पई कमुची ना एटी इनपुट हम पाखरे नाही इनपुट माने लैंड लेबर कैपिटल टेक्नोलॉजी इरिगेशन ये सब इनपुट हम पाखरे नाही देन अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल कोन होची आमे एग्रीकल्चर तो करूचे प्रोडक्शन बढ़िया पाई आमे अधिक अधिक फर्टिलाइजर यूज करछे सारो यूज करछे जहा फल रे नेगेटिव इंपैक्ट कहा ऊपर पडुची ना एनवायरनमेंट ऊपर पडुची दैट इज सॉइल डिग्रेडेशन सॉइल कंटामिनेशन ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन सॉइल पोल्यूशन ग्राउंड वाटर पोल्यूशन ये सब देखिया पडुची एंड ऑटोमेटिकली सॉइल रो फर्टिलिटी डिक्रीज ही जाउची कोन कहली सॉइल रो फर्टिलिटी डिक्रीज ही जाउची तो सॉइल रो फर्टिलिटी डिक्रीज होउची तार यील्ड मध्ये कमी जाउची यील्ड कमिले ऑटोमेटिकली सप्लाई कमी गला या सहित आउ किछि इशू मध्ये लागि रहउची लाइक सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोडक्शन हेला परे एको स्टोरेज करबा दरकार ठीक भाबरे हम एको स्टोरेज करि परने बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोल्ड स्टोर हमको जति की दरकार सेति की मिल पार सेति की प्रोडक्शन सेति की तयारी ही परने गवर्नमेंट करि परने काहे की कोल्ड स्टोर काहे ही परने ना एटा बहुत इन्वेस्टमेंट इज हेवी कैपिटल इंटेंसिव गवर्नमेंट पाखरे एते टंका नै कोल्ड स्टोर फॉर्मेशन करिया पे बा तयारी करिया सो येला आ गोटे प्रॉब्लम प्रोडक्शन ही परने बेटर बुझेला सो 2000 मसिया पाका पाकेरु एटी हमर कंडीशन कोन रहला सिचुएशन कोन रहला ना तो सिचुएशन वाज अफोर्डेबिलिटी हमें अफोर्ड करि पारले बुझियो कि नहीं एटी कोन कले हमें ना एटी हमें अफोर्ड करि पारले क्लियर सेकंड पेज थर्ड पेज को जिबा अच्छा एटी वेलफेयर स्टेट रो कांसेप्ट भी आस्तेला को कांसेप्ट आस्तेला ना वेलफेयर स्टेट रो कांसेप्ट आस्तेला वेलफेयर स्टेट कोन वेलफेयर स्टेट कोन and the state which does socio economic development जो स्टेट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे ताकू वेलफेयर स्टेट बोली कोन एटी एग्जैक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर ता सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर रे जाउछ ना नहीं मते कोन तो एग्रीकल्चर सेक्टर ता सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर रे जाउछ ना नहीं यस और नो यस एटा जाउछ काहे की बिकॉज़ हमें ऑलरेडी देखले इट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज केते अछि एम्प्लॉयमेंट केते दोछ एग्रीकल्चर so agriculture sector development हमारा अर्थ होची ऑटोमेटिकली एंटायर जीडीपी इज इंक्रीजिंग एंटायर इकोनॉमी इज ग्रोइंग सो जेहेतु हमें वेलफेयर स्टेट जेहेतु सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करबा होची हमर बेसिक ऑब्जेक्टिव जो डीपीएसपी रे पढिथिबे डीपीएसपी रे फंडामेंटल सॉरी पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढिला बेले पढिचंदी कि नहीं एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करबा पार्ट 4 रे पढिचंदी कि नहीं एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करबा सो एटी ये कोची वेलफेयर स्टेट होबा कारणरू हमर ऑब्जेक्टिव कोन ना फार्मर मान को प्रोटेक्शन दबो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन दबो प्लस सेलर को प्रोटेक्शन दबो सो इट ये होलिस्टिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करछि फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करिवो समस्त फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करिवो ये टू ईच एंड एवरी मेंबर बा ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर तापर हम आसमे थर्ड पेज रे एठी कोन हला सेकंड फेज ता एठी कंटिन्यू करला बुझैली सेकंड फेज रे आ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट एठी मन रखिबे गोटे पीआईएल फाइल हेतला कहा द्वारा ना बाय पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एथिरे आसला कोन ना नेशनल लेवल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम मनरेगा ऊपर पढेला बेले मोटी डिस्कशन करथि मनरेगा ऊपर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पढेला बेले मोटी डिस्कशन करथि कि जो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इट वाज लेटर ऑन कन्वर्टेड टू मनरेगा हला एटा केते बेले आसला आफ्टर पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल्ड बिफोर द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट बाय यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ये फाइल हैला पर यास सो एठी गवर्नमेंट को कोन टास्क दिया गला ना इफ फूड ग्रेन्स रॉट आइदर इन गोडाउन और डिस्ट्रॉयड इन ऑस्टिन्स टू मैनेज मार्केट प्राइस फॉर द फूड ग्रेन्स और इफ द सेंटर हैड टू गो फॉर एक्सपोर्टिंग व्हीट एट अ वेरी लो प्राइस ये एठी गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन कोन दिया गला ना बेसिक इंस्ट्रक्शन सरल भाषा रे कहूची ना मार्केट प्राइस टा को स्टेबलाइज करिया पाए कोन पाई ना मार्केट प्राइस टा को स्टेबलाइज करिया पाए एते अधिक एक्सपोर्ट कर दियोनी कि एटी जेंती इंडिया रे प्राइस हाइक हे जाउ
just before election 2024 general election पूर्व समस्त देखिए restrictions imposed on export of potato, onion and other products, other commodity ऊपर production ऊपर it restriction लागला. So जो country, there are certain countries like Nepal and Bhutan, those which are completely dependent on India, से माने completely India ऊपर dependent से माने करो horticultural, floricultural and vegetable production पे. तो India तक बंद कर देला, सिटी प्राइस बढ़ी गला. Now India रे काहे की बंद कला? Why government imposed restriction? And just before general election, government tried to show that the price of each and every commodity is in control. There is no inflation rate. There is no increase in price. There is no inflation rate. There is no increase in price. To prove this, to show this, government stopped or imposed restriction on export of different commodities to other countries. That's why there will be more supply, more availability of goods in India. When more availability of goods, when there is more availability of goods, that will lead to decrease in price. So price that is stabilize हो. यही कारण मानक पाई गवर्नमेंट कौन कला ना प्राइस को चेंज कर दे. सॉरी प्राइस बाहर को एक्सपोर्ट करिया को मना कर दे. मुझे पुणी जस्ट आफ्टर इलेक्शन पर पुणी एक्सपोर्ट अलाउड. बर्तमान यू कैन एक्सपोर्ट डिफरेंट प्रोडक्ट्स टू फॉरेन कंट्रीज. एबे एक्सपोर्ट करि परिबे, बट बिफोर इलेक्शन इट वाज डिनाइड. बुझेला? हां. तापर हमें थर्ड फेज को आसे. थर्ड फेज को आसबा. थर्ड फेज रो बेसिक ऑब्जेक्टिव कोन थिला? ना थर्ड फेज रो ऑब्जेक्टिव थिला इकोलॉजिकल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस. कोन कहले थिला एटी ना सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस. सस्टेनेबल प्रैक्टिस कोन? हमर ऑब्जेक्टिव रहला ए पर्यंत हमें देखिले कि एग्रीकल्चर रे प्रोडक्शन बढ़ेबा, मोर यील्ड. मोर यील्ड मींस मोर प्रोडक्शन. प्रोडक्शन इंक्रीज करियो हमर बेसिक ऑब्जेक्टिव रहला. तले प्रोडक्शन केमती इंक्रीज हो ना? बाय इंक्रीजिंग द इनपुट्स. को इनपुट को हमें इंक्रीज करबा ना? बाय इंक्रीजिंग द इनपुट्स लाइक हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, बाय यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, वीडिसाइड, ये सब को हमें अधिक और अधिक यूज करियो लागले. कोन पाई ना? प्रोडक्शन बढ़िया पाई. देखिबे घरे घरे यूरिया, पोटासियम, ए जो सब फर्टिलाइजर रहला, सार रहला, ताको बुझंतु न बुझंतु जमी रे यूज करियो लागले. So indiscriminate use of these fertilizers. Just first find out whether the soil is deficient in those minerals or not. If it is deficient, then use those fertilizers. If it is sufficient, if it is sufficiently available, then what is the requirement of using all these fertilizers continuously in the soil? So it reduces soil fertility over a period of time. जब हमें sustainability बोली कहूचे. So soil रो fertility decrease ही जाउची बा unsustainable practice of agriculture. Unnecessarily देखिबे चाष जमे पानी मडा जीव. So पानी एटी बहुत अधिक पानी नष्ट होला. Water wastage of water. So it led to depletion of the groundwater level. Groundwater level रे जल स्तर ह्रास पाइला, जल स्तर कमी गला. सेते हमको टेक्नोलॉजिकल वे रे एडवांस वे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करियो कहबो, जोटी we should practice drip irrigation. Drip irrigation हमें प्रैक्टिस कर परियो, sprinkle irrigation प्रैक्टिस कर परियो. एटी से सब को प्रैक्टिस न करी कोन कला हमें now unnecessarily wastage of water was there, which led to reducing the depletion, water level depletion, groundwater depletion हमको दिखा. So nowadays there are certain cities, urban areas where we are finding water deficit, water scarcity is there. Think about Delhi, think about Chennai, think about Bangalore. East city मानकर हमको water deficit दिखा, water availability is not there. हाँ कि नहीं? वाटर अवेलेबिलिटी हमको एठी मिलुची कि देखियो डिफरेंट अर्बानाइजेशन ना इंपैक्ट बहुत अधिक पडुची एनवायरनमेंट ऊपर. दिल्ली एनवायरमेंटल पोल्यूशन मैक्सिमम, ई वेस्ट प्रोडक्शन मैक्सिमम, हैदराबाद ई वेस्ट प्रोडक्शन मैक्सिमम, चेन्नई, बैंगलोर एठी हमको ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी नहीं, मुंबई अर्बन फ्लड. So in all the urban regions, because of unsustainable practice, environmental hazards are going on. एठी हमको environmental hazard, environmental disturbance देखियो पाई पडुची. In the same way, in agricultural practices, because of unnecessary or indiscriminate use of different type of chemicals like pesticides, weedicides, insecticides and other fertilizers, there is decrease in the fertility level. So infertile हे जो land गुड़ा को fertility level decrease करतो. So production automatically production and yield decreases. Production भी decrease होउची एवं yield ମଧ୍ୟ decrease होउची. Yes or no? ये सब decrease होउची कि नहीं? Gradually they are decreasing. Automatically ये सब कोन होउची ना decrease ही जाउची. So at the target in the third phase, the very basic objective was sustainable form of agriculture. Sustainable agriculture means agricultural practice for a longer period
where we are receiving the same crop, same yield or same amount of yield, neither increase or decrease in the yield. So बर्तमान देखिए जहाँ कौन कह जाउछि ना, इट इज नोन एज जैविक खेती बा ऑर्गेनिक फार्मिंग बोली कह जाउछि बा नेचुरल फार्मिंग बोली कह जाउछि. नेचुरल फार्मिंग, यस, बायो फर्टिलाइजर्स आर बीइंग यूज्ड. एटी कौन यूज करा जाउछि? इंस्टेड ऑफ केमिकल्स, इंस्टेड ऑफ फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स वी आर यूजिंग बायो फर्टिलाइजर. जोटा देखियो स्टोरिचोपीडिया, निम्बोपीडिया एटी सब यूज करा जाउछि. And awareness is most important in agricultural practice to increase yield. Awareness kono, let's say there are certain type of insects, किछि particular insects थांती, जेमति कि मु कहबी मझिरे आस्ते ना लोकस्ट अटैक, पंगबाला. एमाने कोन धान क्षेत्र सब नष्ट कर दोथिले, जेते प्रोडक्शन थला सब नष्ट कर दोथिले. एटी अवेयरनेस कोन कहूची ना, दे कैन फ्लाई विदिन अ सर्टेन रेंज. माटी रु 2 फीट ऊपर को 20 फुट बा 30 फुट पर्यंत समान उड़ी परिबे, ता तळको ता ऊपर उड़ी परिबे. सो जदि हमें चारि गडरे जोटी हमर खेत अछि, जोटी हमर ताकू जदि हम किछि कवर कर दबा, किछि गोटे क्लॉथ देकी कवर कर दबा, नेट देकी कवर कर दबा, देन ऑटोमेटिकली दे कैन नॉट अटैक टू द फील्ड, समान फील्ड भीतर को पस परिबे. सो दिस इज द बेसिक अवेयरनेस. केते कम टंका रे, केते कम खर्च रे इजीली, केते कम टंका रे, केते कम खर्च रे इजीली हमें कोन कर परिबा ना, प्रोटेक्ट करि परिबा हम प्रोडक्ट गुडा, टोटल कमोडिटी गुडा हम प्रोटेक्ट करि परिबा. बट अवेयरनेस इज नॉट अवेलेबल. अवेयरनेस इंक्रीज करबा दरकार. एठी को माने करि परिबे ना, वॉलंटियर्स दे कैन पार्टिसिपेट. वॉलंटियर्स एठी पार्टिसिपेट करि परिबे. जो माने दोज हु आर इन द एग्रीकल्चरल फील्ड, एग्रो साइंटिस्ट दे कैन पार्टिसिपेट. एग्रो स्टूडेंट्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर फील्ड जो माने छन समान पार्टिसिपेट करि परिबे. एनजीओ, सिविल सोसाइटीज दे कैन पार्टिसिपेट. प्राइवेट सेक्टर कैन पार्टिसिपेट. गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करि परिबे. सो थर्ड फेज रे हमर बेसिक ऑब्जेक्टिव कोन रहिला ना, सस्टेनेबल फार्मिंग बा कंटीन्यूअस फार्मिंग, जो कि यील्ड अधिक होतिबो बा जहा को हमें कहिले ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ फार्मिंग बा जहा को कह जाय कोन ना ग्रीन फार्मिंग. ग्रीन फार्मिंग बा ऑर्गेनिक फार्मिंग बोली हैला, बुझियला. एंड आउ कोन टारगेट रहिला ना, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग यील्ड, bringing green revolution to East India. It was not successful in East India. Green revolution was only successful in UP, Western UP, Punjab and Haryana. Other regions it was not reachable. So to make green revolution reachable to East India, to make green revolution reachable to South India is the basic objective of second green revolution. So ये समय हमारा objective कौन रहला ना, हमें yield बढ़िबा plus regional disparity जो होची in terms of production ताको reduce करिया बा ताको decrease करिया. बुझियला समस्त को? Any doubt? Any doubt on this? एही पर्यंत कहा को किछि डाउट? क्विक समस्त कहियो. बदर तो फॉरेस्ट गार्ड रो रिजल्ट आसीबो ना नहीं? फॉरेस्ट गार्ड अलगा एग्जाम पई त रेस्पेक्टिव क्लास होची. The respective class hoches, they are in those classes you can raise your question and you will be answered. But here if you have any doubt related to OCS examination, particularly OS exam, then please raise your question. I will definitely answer. No doubt aparna, बहुत बढ़िया. शांति clear. Yes, land reform 9th schedule, very good. 9th schedule la add hela kebe asla, which constitutional amendment are land reform? Which constitutional amendment are? Anyway, these are part of your Indian polity and governance. City पढ़ा जो इस topic ऊपर detailed discussion हो. So land reform रे कौन है ना, land reform में कहीं भी चाहिए fragmented है कि land रहिला हम पता, fragmentation रहिला land के, plus आउ कौन problem हैला ना, जमींदारी system रहिला, institutional discrepancy गुड़ा को remove करिया पे हमको land reform आवश्यकता पड़ला. institutional discrepancy को remove करिया पे आउ कौन ना, लैंड रिफॉर्म सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूस करिया पे. जमींदार मानक पाखरे अधिक लैंड रहिला, अन्य मानक पाखरे लैंड कम थिला. सो ये ताको डिस्ट्रीब्यूट करिया पे कहला, तो डिस्ट्रीब्यूट हबो, दैट इज अ पार्ट ऑफ सोशल जस्टिस. कोन कहली? दिस इज अ पार्ट ऑफ सोशल जस्टिस. आको सोशल जस्टिस तो हम पढाई भी मेंस पे सेठी डिस्कस करी. लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल हे परला नहीं, ओनली फॉर दैट पर्पस. समस्त माओवादी मानकर ना सुनिचंती, माओइस्ट मानकर ना सुनिचंती कि नहीं? जहाँ को जो मान को कौन कह जाए, अन्य ना कौन से लेफ्टिस्ट बोली मते कह जाए.
someone is asking question, what is your name? You changed your name to SSC and railway. What is your true name? May I know your name please? એટલે લખુଛે કે સર એન્શ્યોર કરନ୍ତୁ કે ભ્રષ્ટાચાર હો નહીં. ભ્રષ્ટાચાર કોଉଥିରେ હોଉନି ନା ભ્રષ્ଟାଚାର କରପ୍ସନ હોଉନି OPSC ରେ. होउछि ना नहीं, that is the separate part. होउछि ना नहीं, that is the separate part. But remember, there is enough scope, enough opportunity if you go in a proper way to crack this examination. I have many students, each and every year many of my students, they crack this examination. And trust me, Rakesh, yes, your name is Rakesh और बहुत स्टूडेंट प्रत्येक वर्ष क्रैक करछन्ती परीक्षा को without going in the rough way, माने wrong way न जाय कि से माने क्रैक करछन्ती. So I can give you that assurance, if you go in a proper way, if you properly पढुछन्ती, if you complete your syllabus, prelims by mains by ठीक भाବରେ पढुछन्ती, definitely you are going to crack this examination, no doubt in it. इतरे कोनोसे प्रकार डाउट नहीं. बट अलगा पार्ट रे भ्रष्टाचार होची, पैसा नै कि होची, जब बिक्री करछन्ती चाकरी से सब को जानतनी. हमें पॉजिटिवली जीवा एंड विल होप फॉर द बेस्ट. हमें पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन रखिबा, पॉजिटिवली पाठ पढिबा एंड यू विल क्रैक दिस एग्जामिनेशन, नो प्रॉब्लम इन दैट. डेफिनेटली क्रैक करि परिबो से एश्योरेंस मु दोछ हैला. बट प्रॉपर्ली पाठ पढो, पाठ बुझो, आंसर राइटिंग करो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, ऑप्शनल चूज करो, ऑप्शनल पढो, डेफिनेटली यू विल क्रैक दिस एग्जामिनेशन. एतरे किछि रॉकेट साइंस नहीं, बा जो माने क्रैक करतन से माने किछि विचित्र जंतु मन, समस्त साधारण पिला पाठ पढि के क्रैक करतन हैला. सो एठी कोन कहली ना, एठी होची सोशल जस्टिस. माओवादी मानकर ना समस्त सुनिथिबे हां कि नहीं, लेफ्टिस्ट मानकर ना समस्त सुनिथिबे, नक्सल मानकर ना समस्त सुनिथिबे. 1967 ने एटा क्रिएट हेतला नक्सलबाड़ी विलेज वेस्ट बेंगल. कोन पई ना लैंड रिफॉर्म बा लैंड ताको कोन कले माने ठीक भाबे डिस्ट्रीब्यूट हे पाले. लैंड रिफॉर्म रिलेटेड लॉ गुडा को परफेक्टली एंड प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हे पाले. फॉर दिस रीजन ओनली टू टाइप ऑफ पीपल क्रिएटेड, व्हाट विल हैव्स एंड द हैव नॉट्स, बा रिच एंड पुअर. जो माने पर लैंड बहुत रहिला आ किछ जो माने पर लैंड बिल्कुल रहिला. सो अ डिस्टर्बेंस बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट स्टार्टेड, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड हां कि नहीं. मुझेला यही कारण पई ही माओवादी मानकर आरंभ होइतिला. तेणु लैंड रिफॉर्म टा इंपोर्टेंट. ये इक्वालिटी एंश्योर करूची, ये इक्वालिटी एंश्योर करूची बा सोशल जस्टिस एंश्योर करूची. दैट्स व्हाई लैंड रिफॉर्म इज रिक्वायर्ड. ये अनदर एस्पेक्ट कोन पे हमको लैंड रिफॉर्म दरकार. सो एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज ऊपर डिस्कस कली. टेनेंस रिफॉर्म रे कोन ना जो माने टेनेंसी माने कोन, टेनेंस रो अर्थ होची जो माने भाग चाष करूछन, जमी नहीं कि अन्य मानकटू भाग चाष करूछन, ये कुछ सेक्टर रिफॉर्म होवा दरकार. से लैंड रिफॉर्म होवा दरकार. सो रेंट रेगुलेशन होवा दरकार. रेगुलेशन ऑफ रेंट, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ताको प्रॉपर टेन्योर मिलवा दरकार. शेयर प्रॉपर को भाग चाषी को 5 वर्ष 10 वर्ष मिलवा दरकार. से जानिबा दरकार कि केते दिन पर्यंत मो पाखरे जमी अछि. तापर अननेसेसरी बर्डन दिया जीवनी कि मु 90% नेबी, जे चाष करछि से 10% नबो बिकॉज़ मो जमी तो मु 90% नेबी, बा ताको गोटे वर्ष पर काढी देबी, आउ काको भाग चाष दे देबी. ये जिंस करियो. So there is security of tenure. Then ownership rights, tenant मानको ownership right मिलवा दरकार. एई सब जिंस को एंश्योर करवा थिला लैंड रिफॉर्म रो बेसिक ऑब्जेक्टिव. लैंड रिफॉर्म रो बेसिक ऑब्जेक्टिव. सो ये कोन कला ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन कला. कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, जो मानकर फ्रैगमेंट एक लैंड थिला गोटे गोटे डिफरेंट डिफरेंट जगह रे, ताको कोन कला, ताको कोन कला, इन ताको गोटे जगह रे तक सब कंबाइन करवा को लागला. Then cooperative farming रे this is socio-economic development, duty cooperation haba by different stakeholders, by different shareholders. आज रा क्लास रे कोऑपरेटिव सोसाइटी मानक ऊपर अनेक डिस्कशन मु करिछि हला. तो बुझिला लैंड रिफॉर्म रा बेसिक ऑब्जेक्टिव कोन समस्त बुझिले ना, का बुझिला एनी डाउट ऑन दिस. अच्छा ताले लैंड रिफॉर्म रा फेल्योर काई गेला, व्हाई इज दैट अ फेल्योर. ये फेल्योर होबार कारण कोन, लैंड रिफॉर्म फेल्योर होबार बेसिक कारण कोन. प्रथम थिला करप्शन, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल कम रहे. लैंड इज कंसीडर्ड एज अ सिंबल ऑफ सोशल प्रेस्टीज एंड सोशल स्टेटस. कई कार लैंड को बिक्री करिया चाहिए, समस्त लैंड को एक्वायर करके रखिया पे चाहिए हां कि नहीं. सो दिस वाज रीजन फॉर फेल्योर ऑफ लैंड रिफॉर्म. शांति कहजो कि केलोदार को जाय इन तेलुगु फाइन, बहुत बढ़िया टू इंट्रोड्यूस अ न्यू टर्म. So these are reasons for failure of land reform. बुझी पाले समझते ना, एनी डाउट. यदि एही पर्यंत कहार किछि डाउट अछि ताले आज किछि नुवा कांसेप्ट हमें पढिले एग्रीकल्चर
जो गुड़ाक व्हिच आर हेल्पफुल फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट ऊपर आज डिस्कस कली क्वेश्चन आंसर आम प्रैक्टिस कले अनेक गुड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कले पुणी नेक्स्ट क्लास रे आसंता कालीर क्लास रे आउ गोटे इंपोर्टेंट कहबी एफआरपी फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस जेमती एमएसपी देखिले सेमती एफआरपी टा डिक्लेयर हुए कहा पई जानते सुगर केन पई एफआरपी टा कहा पई डिक्लेयर हुए ना एफआरपी इज डिक्लेयर्ड फॉर सुगर केन यहां पर मु डिस्कशन करिवि नेक्स्ट क्लास सीएसपी अनुसार केमती हुए तो कालीर क्लास रे हमें पढिबा इंडस्ट्री ऊपर डिस्कशन करिबा ता सहित मु एफआरपी कोन कहबी आ किछि क्वेश्चन प्रैक्टिस करिवि सो अकॉर्डिंगली यू शुड प्रिपेयर पहले हमें देखिबा जस्ट 2 मिनट समरी आज हमें को पॉइंट ऊपर डिस्कशन करले कोन बुझिले समस्त कोन बुझिले आज क्लास रो के कोन सिखिले यदि कहीं किछि सिखिले कहबे नथिंग एक्वायर्ड नथिंग गेन्ड को पॉइंट ऊपर हमें डिस्कशन करले आज हमें देखले एग्रीकल्चर ग्रीन रिवॉल्यूशन फूड सिक्योरिटी ऊपर डिस्कशन कले फूड सिक्योरिटी फूड फिलोसफी इन इंडिया फूड फिलोसफी हमें केतटा पेज ऊपर डिस्कस कले तीनटा पेज ऊपर हमें एटी डिस्कशन कले आउ कोन पढिले हमें एमएसपी पढैली एमएसपी ऊपर डिस्कशन कले एमआईएस ऊपर एटी डिस्कशन कले आउ कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस कले सो दीज आर द टेक अवेज फॉर द लर्निंग आउटकम्स फ्रॉम दिस सेशन ए सेशन ने हम ए पॉइंट ऊपर डिस्कशन कले आसंता कालीर सेशन ने मु इंडस्ट्री ऊपर डिस्कशन करबी बहुत इंपोर्टेंट सेटी पीएमए पढिया प्राइम मूविंग फोर्स इंपोर्टेंस ऑफ पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऊपर डिस्कशन करबी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऊपर डिस्कशन करबी आउ इंडस्ट्री डिफरेंट एस्पेक्ट इंडस्ट्री व्हाट इज द रिक्वायरमेंट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस सेकेंडरी सेक्टर को हम जानिबा दरकार बुझिबा दरकार एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी केमती इंक्रीज करूची हाउ इट इंक्रीजेस एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी सब पॉइंट ऊपर मु नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करबी सो आज क्लास रे हमें बहुत इंपोर्टेंट टेक अवे पाइले ग्रीन रिवॉल्यूशन रिलेटेड नेक्स्ट क्लास रे मध्य एमती हम इंडस्ट्री ऊपर डिस्कस करबा आउरी अनेक गुडे कांसेप्ट अनेक गुडे टॉपिक ऊपर डिस्कस करबा यदि कहार किछि डाउट अछन डेफिनेटली मते नेक्स्ट क्लास रे अपन पचारि पारि प्रणाम शांति so let's wind up this session that's all for this class I will discuss more in the next class रे हम आउ डिस्कस करबा आज रो क्लास रे एति so tomorrow at same time period asanta kali gotae re puni ago ko discuss kariba and let's wind up this class thank you very much have a good day Shanti is asking sir good name please my name is Samrat Kesari Miss all description is there in the PW application enter biodata is there anyway that's all for this session thank you